Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. How are you? Hope all of you are fine. Class, today our topic is comparing of fractions. Before going to today's topic, first revise like, unlike fraction and equivalent fraction. Fraction having same denominator are called like fraction, and having different denominator are called unlike fraction. Equivalent fraction have the same value even though may look different. For example, 1 over 2 and 2 over 4 are equivalent fraction because they are both half. Today our topic is comparing of fraction. Comparing of fraction mean find relationship between two fraction as greater, smaller or equal to each other. To compare fraction with like, unlike denominator, follow these steps. 1. Use LCM to write equivalent fraction with the common denominator. Number 2. Compare the numerator. The larger fraction is the one with the greater numerator. For example, 5 over 8 and 3 over 8. Which one is greater? In this fraction, 5 over 8 is greater than 3 over 8, because to compare fraction with the same denominator, the greater the numerator, the greater the value of the fraction. जब कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा, हमारे पास वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा. आप लोगों ने याद रखना है. नेक्स्ट इज़ टू कंपेयर unlike fractions with the same numerator, the greater the denominator, the smaller the value of the fraction. अब जब कभी हमारे पास न्यूमरेटर अगर हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है, न्यूमरेटर अगर हमारे पास सेम है तो हमारे पास क्या होगा? वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन हमेशा हमारे पास क्या होगा? बड़ा होगा. कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर and numerator. Next is when we compare fraction with different numerator and different denominator, for example 5 over 8 and 7 over 10, in this fraction both numerator and denominator are different. First we find the LCM of denominator to make equivalent fraction. 5 over 8 and 7 over 10, LCM is 40. So common denominator is 40, making the denominator equal to 40. अब यहाँ पर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जैसे आप लोगों ने पहले बनाना सीख चुके हैं. 5 over 8 है, 5 over 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से. ये बन गया 8 को 5 से किया 40. तो फिर ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 5 are 25 over 40. Next is 7 over 10. 10 4s are 40, 7 4s are 28 over 40. Now compare 25 and 25 over 40 and 28 over 40 are like fraction. And also equivalent fraction, हम इन्हें equivalent fraction भी कहेंगे. With the same denominator we can now compare our like fraction. 28 over 40 is greater than 28 over 25 over 40, because 7 over 10, so 7 over 10 is greater than 5 over 8. हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर अगर हमारे पास ग्रेटर है, यहाँ पे आप देखें कि लाइक फ्रैक्शन बन गया. इन लाइक फ्रैक्शन में ग्रेटर न्यूमरेटर वाला जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है वो हमेशा बड़ा होता है. क्लास, आप लोगों ने इसके ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट सम ऑफ दिस lecture. Remember that when fractions are given in which denominator is same, then the fraction having
ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड व्हेन न्यूमरेटर are same and denominator are different, in which the fraction having greater denominator is greater, okay, and the fractions having numerator and denominator both are different. First we find LCM, then we make their equivalent fraction and then compare. These become a like fraction, and you know that in like fraction if numerator is greater then the fraction will be greater. Now class, इस तरह से इन पॉइंट्स को समझ के आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक पेज नंबर 59 पे, rewrite these pair of fractions so that they have a common denominator, then filling the correct symbol less than or greater than. तो ये आप लोगों ने खुद फिल करने हैं, और क्लास में हमेशा आपसे कहती होती हूँ कि साथ रफ वर्क करें। जस्ट यहाँ पर आपने लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिखाना, आपने रफ वर्क भी करना है। आप चाहें तो इसको नोटबुक पे भी कर सकते हैं, और अगर नोटबुक पे नहीं कर रहे, यहाँ पर आपका रफ वर्क ज़रूर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, वर्क इन टाइम एंड नीटली। अल्लाह हाफ़िज़।